I am Dr. Sunish Goyal. I am practicing at Lavanya Laser and Plastic Surgery in Jaipur. हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो ब्रेस्ट साइज अपना इंक्रीज करवाना चाहते हैं, ब्रेस्ट साइज इंप्रूव करना चाहते हैं, बट दे हैव सो मेनी क्वेश्चंस रनिंग इन देयर माइंड कि हम कराएं ना कराएं। तो आज अपने इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि हु आर द गुड कैंडिडेट फॉर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, ये कैसे होता है, कब कराना चाहिए एंड व्हाट आर द रिस्क फैक्टर इन दिस प्रोसेस। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ द आइडियल कैंडिडेट फॉर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। अगर आपको लगता है कि आपका ब्रेस्ट साइज छोटा है, तो अगर आपको लगता है, ऐसा नहीं कि आप अपने स्पाउस या अपने पार्टनर के कहने पर ये सर्जरी कराना चाहते हैं। इफ़ यू फील कि आपका ब्रेस्ट साइज छोटा है तो आप ब्रेस्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। इफ़ यू आर फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट, यू आर हैविंग लो सेल्फ एस्टीम, और you have some emotional problem because of your breast size, then you can go for breast augmentation. आमतौर पर ये ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन यंगर एज ग्रुप में बहुत कॉमन है, लाइक आफ्टर 20s, और इनफैक्ट कई बार आपके जब बच्चे हो जाते हैं, चाइल्ड बर्थ हो जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है, उसके बाद में भी आपका कुछ ब्रेस्ट साइज लो होता है, वॉल्यूम लॉस होता है। इन कंडीशन में भी हम लोग ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करते हैं, लेकिन इन पेशेंट्स में हमें साथ में ब्रेस्ट टाइटनिंग भी करनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। जो कॉमनली ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करने के तरीके हैं, उसमें एक जो सबसे ज़्यादा कॉमन है दैट इज ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन विद मेमोरी इम्प्लांट या ब्रेस्ट इम्प्लांट, और दूसरा है फैट ग्राफ्टिंग। ज़्यादातर लोग ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन ब्रेस्ट इम्प्लांट से कराना चाहते हैं। इन पेशेंट्स में हम लोग एक ब्रेस्ट इम्प्लांट डालते हैं। ये ब्रेस्ट इम्प्लांट सिलिकॉन का बना होता है, एंड इट्स वेरी हाई ग्रेड सिलिकॉन इम्प्लांट विच इज़ हैविंग ए वेरी स्मूथ अपीयरेंस। कॉमनली जो ब्रेस्ट एनहेंसमेंट या ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन किया जाता है, इसके लिए हम लोग ब्रेस्ट इम्प्लांट यूज़ करते हैं। ब्रेस्ट इम्प्लांट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट इम्प्लांट वी आर यूजिंग। वन इज सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट, दैट इज़ वेरी कॉमन। सो दिस इज द सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट। यू कैन सी इट्स ए very smooth and very flexible, and it gives a natural appearance, natural feeling after your augmentation. And the second implant which we are using, it's a saline implant, which are not common in India. And the one more method which are using for augmentation is fat transfer. If you are having adequate fat in your body, at other parts of your body, we can take out that fat and we can inject that fat for breast augmentation. But there are real different indication for fat transfer as well as for breast implant. एक बहुत कॉमनली लोग पूछते हैं कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में क्या कोई स्कार आता है, या कैन वी मेक आउट कि हमारा ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन हुआ है। तो पहली बात तो यह है कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन with breast implant, when we are doing a breast augmentation with breast implant, our approach is like that कि हम लोग एक hidden conceal area से breast implant को डाला जाता है। ये जो मोस्ट कॉमन साइट है दैट इज इंफ्रामेमरी, जो आपके ब्रेस्ट के नीचे की तरफ होती है, जो नीचे ब्रेस्ट का फोल्ड होता है, वहाँ पर एक बहुत छोटा सा इंसिजन, अराउंड 5 सेंटीमीटर इंसिजन we make, and through that we insert your breast implant. And after some times when there is a fall of your breast, then this scar is completely concealed. No one can see this scar. The other approaches for insertion of breast implant is through your umbilicus or your axilla. But in India, or at our center, we are mainly using submammary, inframammary, or that incision which is under your breast. एक commonly question पूछा जाता है कि क्या ब्रेस्ट इम्प्लांट डलवाने के बाद में या ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बाद में ब्रेस्ट फीडिंग में कोई प्रॉब्लम आती है। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बाद में ब्रेस्ट फीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उसका रीज़न ये है कि जो ब्रेस्ट इम्प्लांट डाला जाता है वो आपके ब्रेस्ट टिश्यू के नीचे डाला जाता है। द कॉमन लोकेशन ऑफ ब्रेस्ट इम्प्लांट इज सबफेशियल, और सबफेशियल मतलब कि आपका जो ग्लैंड है, ब्रेस्ट टिश्यू है, उसके नीचे एक मेम्ब्रेन होती है, उसके भी नीचे डाला जाता है। सो वी आर नॉट इंटरफेयरिंग विद योर ब्रेस्ट टिश्यू।
or in some cases when your existing breast thickness is very small or thickness is very low. In such cases, we put this breast implant under your muscle. So we are not interfering with your breast tissue. So as such, there is no problem in your in breastfeeding. कई बार लोग पूछते हैं कि सर क्या ये breast implant के बाद में कैंसर होने के चांसेस हैं? कुछ रिपोर्ट्स हैं जिनमें which are associated with in those cases that breast implant is with some form of cancer, but it is very rare and it was associated with the textured breast implant जो कि हम लोग पहले यूज करते थे. So there are very few cases reported of cancer which are associated with breast implant, but only with textured implant. Now we are using only smooth implants, and as such there is no association of cancer with smooth breast implant. So don't worry, as such there is no problem with breast cancer in such cases. एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर हमें किस साइज का ब्रेस्ट इम्प्लांट लगवाना चाहिए? ब्रेस्ट इम्प्लांट का साइज, देयर आर टू थिंग्स व्हिच डिटरमाइन द ब्रेस्ट इम्प्लांट साइज. वन इज द बेस ऑफ योर ब्रेस्ट. आपके ब्रेस्ट का बेस साइज क्या है? In smaller chest size, it may be 9 centimeter, 10 centimeter, or in bigger, or if those are having a large frame, they can have like 13, 14 centimeter base size. So our breast implant size depends upon the what is the base size of your breast. So and then if once you decide that your breast size is like 10 centimeter, then now we ask you how much augmentation you want. Like it may be a low profile breast implant, it can be a medium profile, or it can be high profile. So if suppose we are using a low profile breast implant, then this thing is the profile, like thickness. So how much projection will it give to you? So in low profile, usually the projection or breast size increase for 1.5 to 2 centimeter. And in medium profile, it can be up to 3 centimeter. But in high profile breast implant, it can be up to 5 centimeter. So base size is constant, but profile you can decide yourself. What are the risks which are associated with the breast augmentation with breast implant? There are certain risks, but it is very uncommon. That such risk, the common is capsular contracture that can happen in some patient, but it can be prevented. Capsular contracture is one risk. Sometimes there are chances of infection or bleeding, or rarely, very rarely, there are cancer associated with the breast implant. But as such, breast implant surgery or breast augmentation surgery is totally a safe surgery if it is done by experienced plastic surgeon. We are having so many questions, but we will cover up some more questions in our next video. So stay with us. हमारे वीडियो देखते रहिए. अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू. स्टे ब्यूटीफुल.